Assalamu alaikum, welcome back to our sagacity. How did lockdowns changed who we communicated with and how did it change? Discuss using examples from your own personal experience. ये है ऑक्सफोर्ड ELLT की स्पीकिंग पार्ट 2 प्रेजेंटेशन का एक लेटेस्ट टॉपिक और इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि इसको आंसर कैसे करना है. लाइक ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर विद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो. सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या टॉपिक है, तो टॉपिक क्या है. आप इस तरह से बताइए कि the topic of my presentation is how lockdowns changed the way we communicated and also who we communicated with. तो फिर उसके बाद वो आपको वही इंस्ट्रक्शंस जो रोज बताता है, जाहिर है कि 3 मिनट से 5 मिनट बात करना, स्क्रीन पे कैमरा पे देखना एंड नोट्स वगैरह से हेल्प लेना, लेकिन रीडिंग नहीं करना एंड ऑल. ये इंस्ट्रक्शंस देगा. फिर आपसे कहेगा कि जब आप रेडी हो तो आप कहिए आई विल नाउ बिगिन माय प्रेजेंटेशन. तो फिर आप शुरू करिए. आई विल नाउ बिगिन माय प्रेजेंटेशन and I'm going to talk about how lockdowns affected the way we communicated with and also how it changed who we communicated with. तो जब दोनों बातें, क्योंकि सवाल में पूछी गई हैं, तो दोनों बातें ही डिस्कस करनी पड़ेंगी. अब इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि हमने दोनों चीज़ों को अलग से भी डिस्कस करना पड़ेगा. मतलब डिस्कोर्स मार्कर के जरिए बताएंगे कि अभी मैं who we communicated with के ऊपर बात कर रहा हूँ एंड अब मैं how we communicated with के ऊपर. बाय द वे दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड जरूर हैं. फॉर एग्जांपल अगर who we communicated with की बात की जाए तो सपोज अगर पहले आप अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन अब करते हो, तो उसमें वो how का सेंस इज देयर बिकॉज उसी की वजह से ये हुआ है. how की वजह से who हुआ है. तो जहां पे हम who की बात करेंगे वहां पे how का सेंस इज ऑलरेडी देयर, और जहां पे हाउ की बात करेंगे तो प्रोबेबली वहां पे जरूरत पड़े हमें हु वाला सेंस भी देने की. बहरहाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हाउ इट चेंज्ड हु वी कम्युनिकेटेड विद. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो पहले इसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली की एग्जांपल इसलिए है क्योंकि जनरली इट वाज द फ्रेंड्स who we communicated with more. However, because when lockdown started, of course everyone was stuck in their houses, तो वहां पे फिर they couldn't come out, so they had to communicate with their family. It was like you were stuck with them inside a house, so whether you liked it or not, it happened. तो ये पहले तो ये बात है कि किससे बात करना था, वो कम्युनिकेशन किसके साथ ज्यादा बढ़ी. तो ये सबसे पहले कि फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कम और फैमिली के साथ ज्यादा हुई. या आप यूं कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ कम या नहीं भी हुई हो तो मुमकिन है कि ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डू कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म्स लाइक मैसेंजर और व्हाट्सएप, इफ यू कैन कॉल देम सोशल मीडिया. तो अब यहाँ पे वो सेंस आ गया कि उनके साथ तो वैसे भी कनेक्टेड थे लेकिन फैमिली के साथ नहीं थे. बट देयर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट राइज बिकॉज वी नीडेड ईच अदर. लॉकडाउन में जब घरों के अंदर सब कैद थे, जाहिर है कि वहां पे वी हैड नो अदर चॉइस. द नेक्स्ट थिंग वाज द rate of communication with our friends and not friends, rather fellows and peers increased a lot. It rose significantly because we had to learn online, like we had to attend online classes. And when it comes to online classes in countries like Pakistan, there are a lot of issues related to internet connections. तो जब भी internet connectivity का issue आता था, of course we would miss classes. I mean, not on purpose, but rather it would just happen because there was no other option. So later on, we had to, ask every class fellow of ours to actually share the data, share the notes with us. क्योंकि किसी न किसी के घर लोड शेडिंग की वजह से या इंटरनेट पोर होने की वजह से ये मसाइल आते हैं. तो ये भी एक बात हो सकती है. और इसमें आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें सवाल में ये भी कहा है कि पर्सनल एग्जांपल जरूर यूज करें. इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आई इवन टॉक्ड टू दोज क्लास फेलोज ऑफ माइन whom I had never talked to before, merely because they approached me or I approached them, because either I or them missed any of the classes and we needed each other's help. Similarly, teachers के साथ भी communication ज़्यादा हुई. Generally, when I used to, अब I बोल रहे हैं क्योंकि personal example की बात है, आप इसमें कह सकते हैं generally
when I used to go to the college or university, जो भी आप नाम लेना चाहते हैं, I only used to greet my teachers and I only asked them a few certain questions, and sometimes I wouldn't even do that because I thought that actually everything was normal for me. So I never bothered asking any questions in class. However, when I had to attend online classes, then there used to be a lot of new rules and regulations and SOPs which I had to follow. So I was always confused whether I can submit this assignment today or tomorrow, and whether I can get an extension, and whether I have to write it using my pen and pencil, or should I type it, and questions like that. So I always had to approach my teachers, and it was very frequent. To an extent that sometimes I felt that my teachers were irritated with me. Then this also led to a different situation where I started communicating excessively with the class representative, which in our culture is called CR. तो ये फिर कहानी बनाएंगे कि किस तरह से टीचर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ी. इसमें आप अगर यूनिवर्सिटी का जिक्र करना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर्स की बात कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट इट टू योर रिसर्च आर्टिकल्स. Another significant change is the concept of online gaming communities, because I couldn't actually join my friends in the ground. Although I am an enthusiastic cricketer, I couldn't go to the grounds because, of course, it was not allowed to come out of your homes. So I joined online gaming communities. I even played PUBG, and there were some other online games which I did play. And this actually helped me connect with different people from around the globe who had typical interest in gaming, and they were like sort of professionals, and they were experts, and I was a newbie. And but it was an amazing experience. Although with the passage of time, I started realizing that it was merely a waste of time. So after the lockdowns were over, I actually abandoned that habit of mine, fortunately. I also communicated with online retailers and customer care officers because I think 75%, like 3/4 of the purchasing that we were doing was online. Only a few things which we could purchase from the nearby store, we did that. Most of the purchasing was online. So of course we had to communicate with them on WhatsApp and phone calls and emails and stuff. So that was another thing which I experienced a lot. अब यहाँ तक तो हमने who के ऊपर focus किया है. अब हम how के ऊपर focus करेंगे. Now let us discuss how the pandemic affected the way we communicated. So, for example, the first thing was digital platforms. Like most of the communication shifted online. Even those people whom we used to meet every day, we had to contact them online. Even sometimes when I was in this particular period of quarantine for around 21 days, I suppose, even I was in contact with some of my family members via social media. I was quarantined in my room, and my brother was quarantined in the other one. And the rest of the family members, we could talk to them through windows, like they could sit in front of the window, and we used to be inside of the rooms. But his room was on the first floor, so I couldn't actually see him. I couldn't talk to him. So, of course, I had to talk to him using WhatsApp. And we used to do these video calls, and we would have a lot of fun, like gossiping and, remembering the beautiful childhood memories that we had made once. I think this was an amazing opportunity, an extraordinary one, because we would never have been able to, spend all those beautiful moments remembering our beautiful past, because we had never thought that it would be so amazing. But pandemic actually made this happen. फिर उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि another way it affected was that instead of learning on campus, most of the classes were online. So this was another thing. फिर उसको आप explain कर सकते हैं जैसे ऊपर किया कि किस तरह से Zoom पे कॉल होती थी या Google Meet. कुछ examples जरूर ऐड करना. You can take examples of a few softwares. एक दो softwares के नाम इसमें आप ऐड करें, या तो आप कहिए Google Meet पे,
because I remember when I was attending my coursework classes for MPhil, तो उसमें गूगल मीट पे मोस्ट ऑफ द क्लासेस होती थी नॉर्मल में, बिल्कुल इब्तिदा में, जब कोई और प्लेटफॉर्म बना नहीं था, या उसमें कोई आई थिंक कोई ग्लिचेस वगैरह थे. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट Microsoft Teams. That was another platform, because I remember, because I was teaching most of my students online using Microsoft Teams back then. And you can also talk about Skype, which is of course a very common and old classic one. लेकिन I think कि बहुत कम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो देखें आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. जूम की कॉल, तो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ कह सकते हैं कि राइट नाउ हम जूम की कॉल पे हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ELLT की स्पीकिंग जो है वो जूम पे होती है. आप कह सकते हैं कि इसने इस तरह से एफेक्ट किया है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जूम की कॉल पे बैठे हुए हैं. तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं. सोशल मीडिया का भी इसमें आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि सोशल मीडिया ही है ये सारा एक तरह से अगर देखा जाए. लेकिन फेसबुक वाला कॉन्सेप्ट अगर आप दिखाएं, तो उसमें यू कैन कोट दिस एग्जांपल फ्रॉम लम्स ने बेसिकली बहुत सारे वेबिनार्स करवाए, जिसमें बहुत क्वालिटी का कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट उन्होंने फ्री में फेसबुक लाइव रखना शुरू किया था. इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं. मेरा ख्याल है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं और जितने बुलेट पॉइंट्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में हैं, ये मोर देन इनफ हैं मेरे ख्याल के हिसाब से. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय फॉर नाउ.